Assalamu alaikum. How are you all? Hope you all are doing good. I am Sushaima. Today I am going to explain about demand function, individual demand, market demand, demand curve with demand schedule. So what do you mean by demand function? Demand function, it is nothing but a relationship between a product demand for a commodity and its various determinants. Determinants क्या होते हैं? जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो Y is a income, T states for taste, expectations, then size of population and government policies. So they are what many determinants. So here it's denote in the what algebraic equations. So dn is equal to p n y t h g. आप ये जो देख रहे हो that is nothing but the what determinants. So dn denotes for the what particular commodity, demanding for a particular commodity, and f stands for what you can see here f. So f is nothing but the what function, and p n y ये आप देख रहे हो जैसे कि p n is nothing but the price of all commodities, y is nothing but the income, then t for taste, then e for expectation, then size of population and government policies. So it is a relationship. सो यहाँ पे डिमांड एंड डिमांड फंक्शन, डिमांड क्वांटिटी, डिमांड क्या होता है? द टर्म डिमांड रेफर्स टू द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी. सो यहाँ पे डिमांड इज़ नथिंग बट वेरियस क्वांटिटीज़ हम डिमांड करते हैं एट डिफरेंट प्राइसेस by a consumer, where the consumer is ready to buy at different prices फॉर अ कमोडिटी. सो यहाँ पर ईजी में अगर आपको ईजी वे में आपको अगर समझाना चाहती हूँ तो इट्स नथिंग बट फॉर एग्जांपल आई कैन शो यू हियर पिक्चर लाइक कंज्यूमर बाय 2 आइसक्रीम इफ़ द प्राइस पर आइसक्रीम इज़ ₹10. अगर 10 रुपीज़ रहेगा देन कंज्यूमर विल बाय 2 आइसक्रीम. वही अगर पर आइसक्रीम अगर 8 रुपीज़ को मिलेगा तो कंज्यूमर विल बाय 4 आइसक्रीम. सो व्हेन द प्राइस इज लेस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल बी मोर, एंड व्हेन द प्राइस इज मोर द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल बी व्हाट लेस. सो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, द कंज्यूमर बाय, सपोज़ मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक ग्रॉसरी शॉप को जाती हूँ. सो वहाँ पर मैं बोलूँगी कि भैया एक आइसक्रीम कितना है, तो वो मुझे बोलेंगे कि एक आइसक्रीम 10 रुपीज़ है मैडम. अगर आप जैसे कि मैं 2 आइसक्रीम्स लूँगी तो वो बोलेंगे कि जैसे कि मैडम अगर 4 आइसक्रीम्स लोगे जैसे कि तो आपको 8 रुपीज़ पड़ेगा. यो यहाँ पर 10 रुपीज़ को मैंने एक आइसक्रीम लिया था, जैसे कि 10 रुपीज़ बोलने पर मैंने 10 रुपीज़ पर मैंने 2 आइसक्रीम लिया है. सो वही अगर उन्होंने बाद में बोला कि ग्रॉसरी शॉपकीपर ने बोला कि मैडम आप अगर 4 आइसक्रीम लोगे तो आपको पर आइसक्रीम 8 रुपीज़ पड़ेगा. सो दैट इज़ नथिंग बट दी वॉट डिमांड. एंड क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, जैसे कि मान लो सपोज़ फॉर एग्जांपल मैं वही शॉप को बोलूँगी, जो शॉपकीपर को पूछूंगी कि भैया एक आइसक्रीम को कितना पड़ेगा, तो वो बोलेंगे कि मैडम आप 1 लो, 2 लो या 3 या 5 कितने भी लो आपको पर आइसक्रीम 10 रुपीज़ ही पड़ेगा. दैट इज़ नथिंग बट द क्वांटिटी डिमांड. हियर द स्पेसिफिक कमोडिटीज डिमांडेड एट स्पेसिफिक प्राइस, दैट इज़ नथिंग बट द व्हाट क्वांटिटी डिमांड. So here the term quantity demand refers to the specific quantity to be purchased against the specific price of a commodity. So ये होता है क्वांटिटी डिमांड. और डिमांड इज़ नथिंग बट मैंने आपको बोला कि क्वांटिटी डिफरेंट कमोडिटीज़ आर परचेज एट व्हाट डिफरेंट प्राइसेस. सो यहाँ पे various commodities are quantity of commodities that are purchased by a consumer at different possible prices. That is nothing but your demand. So even here like example, the consumer demand 2 ice cream if the price per ice cream is ₹50, and 4 ice cream if the price per ice cream is ₹10. सो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, इट्स नथिंग बट 4 आइसक्रीम इफ प्राइस हैपन्स टू बी व्हाट 10 पर आइसक्रीम. सो दैट इज़ नथिंग बट दी व्हाट क्वांटिटी डिमांड. सो व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड शेड्यूल? So demand schedule is nothing but the what table. So I can show you here. So this is a demand schedule, and this is the graph which is presented here. It's nothing but the curve. So demand curve, demand schedule क्या होता है? It is nothing but the table where there is a price and the quantity demand. So यहाँ पर आप बिना आप explanation के पढ़े हुए भी आप explain कर सकते हो, जैसे कि different quantities are demanded, जैसे कि 10 रुपीज़ 20 30 आप देख रहे हो, different quantities are demanded at different price in the
at a given specific at a specific period of time in the market. So by a single consumer, a single consumer is nothing but individual demand. वही आप अगर मार्केट डिमांड के बारे में जानना चाहते हो, it's nothing but different commodities are purchased at different prices by a consumer in the market. So that is nothing but the what demand schedule. So here, so demand schedule, it is nothing but the table of the different amount of commodities. जैसे कि आपने देखा 10, 20, 30. So that is nothing but the commodities that are purchased in the market at different prices. आपने देखा जैसे कि 10 रुपीज़ या 5 रुपीज़ 3 रुपीज़ वहाँ पे प्राइजेस होने पर मैंने different commodities purchase किया है. So that is nothing but in the market at a different prices. So demand schedule, there are two types, individual demand schedule and market demand schedule. Individual demand schedule क्या होता है? Individual demand schedule is nothing but as I said here, like different commodities like 10, different commodities are purchased like 10, 20, 30. Different commodities are purchased at different prices, different price by a consumer in a market during a specific period of time. You can give your own explanation. So here, like individual demand for a commodity is the amount of commodity which the consumer is willing to purchase at a given price. जैसे कि आपने prices देखा 5, 4 at a given price over a specific period of time. So here in individual demand there is a inverse relationship, and when the price decrease, the demand for a commodity increase, the price increase, the demand for a commodity decreases. So here, like you can see, you can give your own choice of numbers, like give numbers in prices, give your own numbers, like either you can give 10, 8, but maximum prices आप start करना. Maximum price you take as 10, 20, then 10, then go for 8, then go for 6, then go for 5, like that goes on what reducing. So 5, 4, तो यहाँ पे prices मैंने क्या लिया, जैसे कि 5, 4, 3, 2, 1 प्राइजेस आप चाहे तो 10, 8, 6, 5 वैसे भी डाल सकते हो. जैसे कि क्वांटिटी डिमांड, and whenever the price is more, see the price is more 5, I am demanding for the commodity less 10. When the price is 4, I am demanding for the commodity more. That commodities it goes on increasing and demand it goes on what decreasing. यहाँ पर दाम कम होने पर, दाम घटने पर आप डिमांड ज़्यादा करोगे, और प्राइसेस के ज़्यादा होने पर आप डिमांड कम करोगे. सो प्राइसेस अगर कम हो यू विल बी डिमांडिंग मोर, अगर प्राइसेस अगर ज़्यादा हो देन यू विल बी डिमांडिंग लेस. So 5 you will be demanding for 10. When it is 4 rupees you will be demanding more 20. When it is 3 you are demanding still more 30. When it is 2 I am demanding still more 40. Like you can take as 40 chocolates or 40 ice creams. See, when it was a price was 1, I am demanding for 50 chocolates. Okay, so when it was 5 the price was more, I was demanding for 10 chocolates. See, when the price is 1 I am demanding for 50 chocolates. यहाँ पर कितना फ़र्क है देखो. जैसे कि दाम कम बढ़ने पर मैंने कम ख़रीदा, और दाम के कम होने पर मैंने ज़्यादा डिमांड किया. So schedule, you can, schedule is nothing but the word graph. So put like all the numbers like prices in vertical line 5, 4, 3, 2, 1. सो आप 5 से स्टार्ट करना, 5, 4, 3, 2, 1. इन हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड ऑल नंबर्स, पुट दी ऑल नंबर्स 10, 20, 30, 40 अरेंज कर देना. और जब आपका प्राइस जैसे कि डिमांड 10 रहेगा, गो फॉर 5 एंड मार्क द पॉइंट. व्हेन इट इज़ 20 डाउन इन हॉरिजॉन्टल लाइन, गो फॉर 20 एंड मार्क फॉर 4. व्हेन इट इज़ 30, गो फॉर 3 and mark for 3. Take as 40 and mark for 2, and take as 50 and mark for 1. You will get one that is down sloping one curved line. So it will be from left to right. आप देख रहे हो जैसे कि लेफ्ट से स्लोपिंग लाइन कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट से राइट. सो दैट इज़ नथिंग बट, ये जो आप स्लोपिंग लाइन देख रहे हो दैट इज़ नथिंग बट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड. So next it is nothing but the what you can show in table, like I have taken 100 rupees, 80, 60. See, I have started from 100 rupees. When it was 100 I am taking 5 shirts. When it is 80 I am taking 7 shirts. When it is 60 I am taking 10. When it is 40 I am demanding 15. When it is 20, see I am demanding still more 20.
व्हेन इट इज़ 10 आई एम डिमांडिंग फॉर 30. सी, जहाँ पे प्राइस बढ़ने पर मैंने 5 शर्ट्स ख़रीदा, वही अगर 10 रुपीज़ होने पर मैंने 30 शर्ट्स ख़रीदा. सो यहाँ पर जब प्राइस ज़्यादा था तो मैंने डिमांड कम किया था. सो यू कैन गिव द नंबर्स ऑफ़ योर ओन चॉइस, जैसे कि आप आपके चॉइस के नंबर्स डालना. जैसे कि यू कैन पुट एज वॉट लाइक 200 और 300, देन गोज़ ऑन वॉट रिड्यूसिंग, और यू कैन 50. देन आप 50 से आप क्या करना, जैसे कि 30, 20, 10, 5, वैसे आप जैसे चाहे आप नंबर्स ऐड कर सकते हो. लेकिन सिर्फ एक बात याद रखना, प्राइस बढ़ने पर आपकी डिमांड कम होनी चाहिए, और आपकी प्राइस कम होने पर आपकी डिमांड बढ़नी चाहिए. लेकिन टेबल जब भी आप स्केड्यूल बनाते हो तब आप मैक्सिमम प्राइस डालना, और आप जब स्टार्ट करोगे आप स्केड्यूल, मैक्सिमम प्राइस एंड विथ मिनिमम डिमांड फॉर अ कमोडिटी. ओके, लाइक जब आप जैसे कि मैक्सिमम प्राइस से स्टार्ट करते हो ना, जैसे कि यहाँ पर देखो आप, जैसे कि आपकी प्राइस 10 होने पर आप 30 डिमांड कर रहे हो, आपकी डिमांड क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी. ओके, और प्राइस क्या होगा, बढ़ने पर आपका प्राइस कम होते जाएगा. सो यहाँ पर यू कैन गिव योर ओन एक्सप्लेनेशन. व्हेन द प्राइस वॉज 100, द कंज्यूमर वॉज डिमांडिंग फॉर 5. व्हेन द प्राइस वॉज 10, द कंज्यूमर इज़ डिमांडिंग फॉर 30 शर्ट्स. सो आप चाहे तो पूरे, जैसे कि 80 होने पर 7 डिमांड किया कंज्यूमर, देन इज़ वॉट इज़ डिमांडिंग इज़ गोज़ ऑन इंक्रीजिंग व्हेन द वॉट प्राइस इज़ रिड्यूसिंग. सो आप चाहे तो कितना भी आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो. ये ज़रूरी नहीं कि हम बुक से ही पढ़कर एक्सप्लेनेशन दें. हमें एक बार अगर समझ में चले गया तो हम चाहे तो हम हमारे एक्सप्लेनेशन भी हम दे सकते हैं. बट वॉट एवर यू आर गोइंग टू राइट, इट शुड बी वॉट रिलेटेड. So and also like demand schedule, it's nothing but the table where it was shows the price and the quantity demand. Okay, demand curve is what? Demand curve is nothing but the graphic representation where you are going to draw a graph. So it's of demand schedule. So according to Lipse, the curve which shows a relationship between the price and the commodity. यहाँ पे एक relationship price and the commodity का होता है. सो आप देखते हो जैसे कि डिमांड कर्व शेड्यूल में क्या था, जैसे कि प्राइस एंड दी डिमांड. सो हियर द कर्व विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द अमाउंट ऑफ द कमोडिटी द कंज्यूमर विशेस टू परचेज इज कॉल्ड द डिमांड कर्व. सो इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व. इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है भैया, सिंगल कंज्यूमर, आप जो भी ग्राफ बनाते हो वो सिंगल कंज्यूमर का बनाते हो, इज़ अ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. आप जो भी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है वो देखकर आप क्या करते हो, आप कर्व बनाते हो. So this is the individual demand curve where I have taken 20 shirts, 100 rupees, 80 rupees, 60, 40 and 20 rupees. Put the price on the vertical line, and in horizontal line you have to represent the quantities 5, 10, 15, 20, 25, 30. And when the price is 100 you are demanding for 5. When the price is 80 you are demanding for 10, like that. Mark even the points already I have discussed there. So mark for last, when the price is 10 you are demanding for 30 shirts. So यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि एक स्लोपिंग डाउन एक कर्व बन रहा है. So it is from from left to right. So that is nothing but the demand curve. So where there is a curve is nothing but the inverse relationship between the price and the demand. So you can show your, like even you can give in your explanation. So 0 and x axis, that is nothing but the quantity, and y y and x, either you can y and x. So y and 0 is nothing but the price on the vertical, and the 0 and x the quantity, that is nothing but in the horizontal. And you can give your own explanation. So I have taken many examples here just to it will be easy for you all. So like मैंने यहाँ पे और एक डिमांड कर्व बताया, जैसे कि मैंने नंबर्स प्राइसेस 5, 10, 15, 10, 20, 30. सो मार्क एज टेक द प्राइस एंड टेक द क्वांटिटीज़. सो मार्केट डिमांड क्या होता है, सो मार्केट डिमांड शेड्यूल, इट्स नथिंग बट
वेयर द मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी, जैसे कि यहाँ पर आप देखो जैसे कि टोटल क्वांटिटीज़ आर डिमांडेड, जैसे कि 10, 13, 6, 11, आप ये जो टेबल पे देख रहे हो जैसे कि क्वांटिटीज़ टोटल इट इज़ हाउ मच 40. सो यहाँ पे डिफरेंट टोटल कमोडिटीज़ आर डिमांडेड बाय दी वॉट डिफरेंट कंज्यूमर्स, जैसे कि फर्स्ट बायर, सेकेंड बायर, थर्ड, वेयर बाई डिफरेंट प्राइजेस. ओके, डिफरेंट क्वांटिटीज़ विल बी डिमांडेड. सो यहाँ पे देख रहे हो जैसे कि मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अप द टोटल क्वांटिटीज़, जहाँ पे मैंने यहाँ पर आप देखना जैसे कि मैंने क्वांटिटीज़ ऐड करके हूँ, जैसे कि 10, 13, 6 and 11 it will be how much 40. Like that you have to add the what total quantities. So adding up the total quantities demanded at various prices, आपने देखा जैसे कि different prices थे and also individual over a specific period of time in the market. So that is nothing but the what market demand, and also the schedule is what, schedule is nothing but the what curve. So where you are going to explain as market demand. So when the price is 10 you are demanding for what, 10, and when the price is 10 you are demanding for quantity how much you are taking. First buyer is taking 10 and the second buyer is taking 13 and the third buyer is taking 6 and the fourth buyer is taking 11. So please